Hello dear students, I welcome you all to my channel Target with Devin. Students, how you all? I hope you all are fine. Today I am going to teach you about present perfect tense. Students, present indefinite I have taught you. You can visit my channel. Now today present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो ये एक्सप्रेस करते हैं कि बोलते समय कोई कार्य कंप्लीट हो रहा है या उसके आसपास कोई काम क्या हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, यानी कि कंप्लीट हो रहा है. फॉर एग्जांपल, माताजी खाना बना चुकी है, वह घर पहुंच चुका है. इन एग्जांपल से हमें यह पता चल रहा है कि बोलते समय कोई कार्य क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है. नेक्स्ट, पहचान. इस टेंस की पहचान कैसे की जाती है? हम कह सकते हैं हिंदी वाक्य के अंत में चुकी है, दिया है, वो सेंटेंसेस किसके होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे. नेक्स्ट, नाउ positive sentence. That sentence is called positive sentence, which gives the sense of yes. It's structured now. At first, subject, then helping verb has oblique have, then main verbs third form plus object. You know, has, have. Now क्वेश्चन उठता है कि हैज का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, हैव का प्रयोग कहां पर किया जाएगा? स्टूडेंट, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि जब एक की बात होगी, डूअर क्या होगा, यानी कर्ता क्या होगा, एक होगा, काम करने वाला एक होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर. तो उसके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी कि मोर देन वन हो, तब किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा. देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. देन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कर्म. कर्म, दैट मीन्स सब्जेक्ट किस पर काम करता है या क्या काम करता है, उससे हमारा ऑब्जेक्ट निकल आया है. देखें एग्जांपल, मैं यह किताब पढ़ चुका हूं. इस सेंटेंस से हमें यह पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है. तो देखें, एट फर्स्ट सब्जेक्ट आई, सो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का, हेल्पिंग वर्ब. देन मेन वर्ब, एक्शन वर्ब क्या है, रीड. रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड. देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यह किताब, दैट मीन्स दिस बुक. इट मीन्स आई हैव रीड दिस बुक. नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ हमारे बॉस ने एक मीटिंग बुलाई है. तो देखें, लास्ट हिंदी वाक्य के अंत में बुलाई है, यानी कि इस सेंटेंस से क्या सेंस निकल रहा है, काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है. तो देखें, हमारे बॉस, दैट मीन्स इट इज सब्जेक्ट, सो आवर बॉस. देन इट इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई हैज. देन मेन वर्ब, दैट मीन्स बुलाना, इट मीन्स कॉल, इट्स अ थर्ड फॉर्म, कॉल्ड. देन ऑब्जेक्ट एक मीटिंग, दैट मीन्स अ मीटिंग. आवर बॉस हैज कॉल्ड अ मीटिंग. नेक्स्ट, नाउ तुम बहुत बदल गए हो. इट मीन्स सब्जेक्ट हियर यू, इट इज प्लूरल, दैट्स व्हाई हैव. देन मेन वर्ब बदलना, दैट मीन्स चेंज, इट्स अ थर्ड फॉर्म, चेंज्ड. Changed. Then bahut, that means a lot. You have changed a lot. Next example, उन्होंने उसकी अनुमति ली है. That means उन्होंने, that means they. It is plural, that's why have. अनुमति लेना, that means taken. Taken उसकी अनुमति, that means his permission. His permission. They have taken his permission. Next, now negative sentence.
You know students, which sentence gives the sense of no, that is called a negative sentence. Now is its structure: at first subject, then has, have, that means helping verb, then not, then main verbs third form plus object. Now example, वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं, that means at first subject here they, then it is plural, have helping verb, then not, then main action, that means समाप्त करना, that means finished, then अपना कार्य, that means their work. You can say they have not finished their work. Next, now interrogative sentence. At first yes and no type sentence, which questions answer we can deliver by yes and no, that is called a yes and no type sentence. It's a structure now. Helping verb, yes and no type sentence is started from helping verb, that's why has, have, then subject plus main verbs third form plus object, then question mark. For example, क्या विद्यार्थी यहाँ आ चुके हैं, that means subject here students, that's why it is plural, so have students, then main verb आना, that means third काम came, come, then here, so have students come here. Next, now क्या पूजा एक कार खरीद चुकी है, so subject here पूजा, that's why has पूजा, then main verb खरीदना, that means bought, then object a car question mark. Students, it is helping verb, then subject, then main verb by, it's a third form bought, then object a car. Has पूजा bought a car. Next example, क्या वह अपना मोबाइल नहीं बेच चुका है, it is interrogative negative sentence, so subject here he, that's why has, then he, it is interrogative negative, that's why not, then main verb बेचना, that means sell, sold, then object अपना मोबाइल, so that's why his mobile. So students, next example, क्या पिंकी मुरली नहीं बजा चुकी है, you will translate it and you will send its answer in comment. So next, now WH type sentence. WH type sentence is started from question word, which sentence answer we can't deliver by yes and no, that is called a WH type sentence. In another way, you can say which sentence is started from question word, that is called a WH type sentence. So structure now, at first question word, then has, have plus subject, then main verbs third form plus object, then question mark. For example, now वह एक पक्षी को क्यों मार चुका है, so according subject we have to use helping verb. At first why, question word it is, then helping verb has, because subject is singular here, then main verb marna, that means kill, it's a third form killed, then object a bird,
Why has he killed a bird? Next example, वे यहाँ क्यों नहीं पहुंच चुके हैं? So at first question word why, then helping verb according subject plural, that's why have, then subject they, then it is interrogative negative, so after subject not, then main verb पहुंचना, that means reached, then here why have they not reached here? Next now कौन आ चुका है? So यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कौन, that means who, it is talking about only one, that's why has come के come, who has come. Next कौन कौन ना चुके हैं? So at first here who, it is plural here, now that's why have, it is talking about more than one, then helping verb, then main verb dance, it's a third form, danced, who have danced. Next कौन नहीं खेल चुका है, that means who has, because it is talking about only one, then not, then main verb play, it's third form played, who has not played. So students, I hope you have understood this topic. If you have not understood, you can watch this video again and compose some sentences with the help of this video. Then subscribe this channel and share, comment, like. Thank you.